Hello students, this is Amrendra. Welcomes you DSS online English class. Today I am going to cover the second poem Fire and Ice. This is the second video of the poem. First poem you have studied summary introduction, but in this poem just now I am going to teach you explanation line by line. As you know, you have read in the last video, Robert Frost, what did he want to say? Through this poem he wanted to say that the world will end a day. Obviously it would end in either of the two way, either by ice or fire. So as you know that I told you in this poem the poet expresses profound idea. What's the idea? That the idea that the world would end in either of the two ways, either by ice or fire. Both the components are compared with self-destruction. Human emotions, desire or hatred. This poem very artistically underpins the philosophy that we let our emotions rule us, and if we don't control them, if we don't control our desire, if you don't stop to harm our nature, they will surely destroy everything around us. Similarly, he thinks fire and ice both are just as competent, proper in bringing the world to a catastrophic end. No one can stop to end of the world. If you don't stop to harm the nature, if you don't stop whatever we are playing with nature. So let's start line by line. Stanza. First stanza, this stanza just now you are telling that first line, second, third, fourth, fifth, sixth, seven, eight, 9. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice. So fire, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, you know, just I showed that here. Fire symbolize desire. Ice is symbolic of hatred. So here, in this poem, in this stanza, the poet described the profound idea that the world would end in either of two ways. What's the two ways? Just I told you that here, fire and ice. Some people say that means you can say there are two different thoughts in the world. Some wise people, you can say that a group of wise people say, what say that? Yeah, you can say that one group's opinion that someday the earth will end and it would lead to fire. One group is that opinion. What that opinion? With ice.
they say that if the temperature goes down to an extent that makes life on earth impossible. I like Antarctica, you know that. So through this, here in this stanza it will say that कि लोगों का कहना, जो पोएट कहना चाहता है, पोएट क्या कहना चाहता है, पोएट ये कहना चाहता है कि दुनिया, जैसे इस विचार पे कि दुनिया खत्म कैसे होगी, एज यू नो दैट कि जो चीज आया हो तो खत्म ही होगा। इस पे दो तरह से लोगों का मत है, दो तरह से ओपिनियन है। पहला जो ओपिनियन है सम से मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल से दैट, क्या बोलते हैं उनका जो ओपिनियन है, उनका जो विचार है, वो कहते हैं कि दुनिया किससे खत्म होगी, फायर से खत्म होगी, मतलब डिजायर से खत्म होगी। और डिजायर इट वुड आल्सो मीन मैन मेड डिस्ट्रक्शन, बिकॉज मैंस ग्रीड और एनिमिसिटी लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग और न्यूक्लियर वार, जो उनकी इच्छा आजकल बढ़ती जा रही है, इज लीड टू न्यूक्लियर वार। And it also points to the collapsing the world around a person because of his mistake, owing to similar reason. So that's why the poet has demarcated the region of this destruction into two major group of thoughts, one in favor of fire and other in favor of ice. So just now I would like to say that here कि कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया कैसे खत्म होगी, फायर से खत्म होगी। फायर मीन्स, यहाँ फायर जो सिंबॉलिक है, फायर एक सिंबॉलिक पोएम जो मीन्स डिजायर, इच्छा। एवरीवन वांट टू बिकम एम्बिशियस, दैट्स वाई हम एम्बिशियस बनने के लिए, अपनी डिजायर विल को फुलफिल करने के लिए, डिजायर मीन्स स्ट्रांग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग और विशिंग टू समथिंग टू हैपन, तो कह सकते हो कि उसको पाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, किस तरह से हम नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वही लोग कहना हुआ है कि एक खत्म हो जाएगी और आग से ही खत्म होगी। बट वहीं पे जो दूसरा ओपिनियन, सेकेंड ओपिनियन क्या है कि सम से इन आइस, कुछ लोगों का कहना है कि वो आइस से होगा, क्योंकि आइस, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट कि आइस इज सिंबॉलिक। ये आइस जो एक इंडिकेट कर रहा है हैट्रेट, नफरत, लोगों में जो कितने नफरत है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, फेवर मीन्स सपोर्ट करना, कह सकते हो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हियर देख सकते हो कि I hold with those who favor fire, but it had to perish twice. Favor means here पे endorse support, perish you know well that थोड़ा मुश्किल या die, difficulties. तो now you can say that here to say that for destruction ice is also great and would suffice. Here the poet want to say that it means that to have desire. From his knowledge and experience of this feeling and the havoc it can cause to a person if done in excess, he agreed that desire can be a cause of destruction. Fire is used, just I told you that here. And all these emotions are associated with hotness. And here, just now I told that desire could means ambition, aspiration, greed, luxury, everything. And that's why we commit mistake, or so to say, since in running after our desire, we do not see that it can harm other people, animals, plant, our nature,
हम देख ही नहीं रहे हैं कि हम अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए कर क्या रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। बट आई थिंक वो बोला कि आई होल्ड विद दो, जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस करा कि अगर 2 बार दुनिया को ख़त्म करना पड़े, ट्वाइस 2 बार ख़त्म करना पड़े, तो ये पर्याप्त मात्रा में है, फायर ख़त्म कर सकता है। बट आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड बी सफाइस मीन्स सफिशियंट। जैसा आई टोल्ड यू कि यहाँ पे जो पोएट है ना, वो एक्सपीरियंस लिया हुआ है, नेगेटिव फीलिंग को बता रहा है कि जो हैट्रेड है, अपने आप से नफरत कर रहा है, एंड आल्सो इन पीपल अराउंड हिम, ही इज ओनिंग अप टू हैव दिस फीलिंग हिमसेल्फ, सो वी कैन आल्सो से दैट ही इज बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद अस। बट हैट्रेड, जैसे आई टोल्ड यू, दैट्स हैट्रेड, जो हम लोग को नफरत, एक दूसरे से इतना हम लोग जलने लगे हैं, तो हैट्रेड इज टेकन टू बी एन आइसी कोल्ड इमोशन, फ्रीज कर देगा, हमारे इमोशन को जमा देगा। बट इट वुड आल्सो व्हेन यू बिकम सेल्फिश एंड थिंक ओनली अबाउट योर सेल्फ, यू डोंट केयर अबाउट एनी बॉडी एल्स, ओनली, कोई किसी के बारे में नहीं सोचेगा, केवल अपने बारे में सोचेगा, दैट इज जेलस। सो अब यहाँ पे है कि पोएट क्यों आइस को एसोसिएट कर रहा है हैट्रेड, जो आइस से एसोसिएट कर रहा है हैट्रेड को, क्योंकि डिस्ट्रक्शन जो होने वाला इस आइस से, जैसे ही टोल्ड दैट कि दुनिया जो डिस्ट्रक्शन होगी, दुनिया खत्म होगी, या तो फायर से खत्म होगी या तो आइस से खत्म होगी, यानी डिजायर से खत्म होगी, या तो लोगों को नफरत, हैट्रेड कितनी नफरत है उससे खत्म होगी। मीन्स बोला है, देखते हैं कि अब समझते हैं कि क्यों यहाँ पे हैट्रेड आइस को सिंबॉलिक किया गया है, क्योंकि वाई डिस्ट्रक्शन बाय आइस इज फॉलोइंग डिस्ट्रक्शन बाय फायर। या यू हैव अ फिट ऑफ रेज विच इज अ हॉट फीलिंग, देन इट कीप्स स्मोल्डरिंग इनसाइड यू एंड फाइनली यू बिकम impervious to love. You become indifferent, uncaring, devoid of positive feeling. नेगेटिव थॉट्स आएंगे, किसी चीज़ की केयर नहीं होगी, और दस हैटेड डिस्ट्रॉयज द वेरी ह्यूमैनिटी इन यू। नफरत करोगे तो खत्म ही तो हो जाएंगे ना, तुम्हारे अंदर जो फीलिंग होगी, मानवता का खत्म, मानवता का जो पार्ट है, मानवता जो तुम्हारे अंदर है, वो खत्म हो जाएगा। इफ लव इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। जब लव खत्म हो जाए किसी के दिल से, सब कुछ खत्म हो जाता है। देखते भी हो कि लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। एंड दिस इज अ ग्रेट रेसिपी फॉर एन impending disaster, that is destruction, impending disaster. So on the basis of it you can say that yeah, कि नफरत से भी लोग खत्म हो जाएंगे। And last line, and would suffice, this line describe the mind and makes you here stand on their ends. It frightens you and makes you shudder to think that the very inadequacies and imperfection in human nature could becoming an us lead to our destruction. जितने भी हैं सबके सब सफिशिएंट हैं खत्म होने के लिए। if you don't control to stop the harm of nature, play, negative thoughts, everything will be over. So now you can say that yeah, this poem makes us think deeper about our negativity. It propels us towards introspection. What we can learn from it is that we should strive to keep human values alive. We should keep our desire and hatred in check. Desire can be controlled by being satisfied and happy with what one has. Love for all living beings and nature can be an antidote for venom of hatred. Clear?
Now let us see the literary device. Before it, rhyming scheme. What's a rhyming scheme? Here, rhyming scheme of this poem. What is that rhyming scheme of this poem? Look here. Fire, ice. Some say that would fire in an empire. You know well that when the first and third. Look here. Fire, desire. Fire. So on the basis of you can tell that the rhyming scheme is here A B C. A B C. And second B C B C B. Twice, eyes, head, great. Twice suffice, eyes suffice. So A B C B C B. And right now let us see that some figure of speech of this poem. First is here, you can tell that here that the last video I told you that's what's a rhyming scheme, why I have taken live class. So I told you that is first is assonance. No, sorry, first is look here, anaphora. Some. I told you that's what's anaphora. Anaphora is that when two consecutive lines begins with the same word. Look here, some. That is anaphora. Clear? And second is assonance. First is anaphora. Clear? Anaphora. Second is assonance. What is assonance? Assonance. Assonance. Assonance is mean that a repetition of two vowel sound in same line. The repetition at a different places in different words. Like this here, O. Look here. SOM is some. O. WRD word. Now you can say that's assonance. Favor, fire. बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे. अब देखो फेवर, एफ यहाँ पे एलिट्रेशन कर सकते हो. एस एलिट्रेशन जब दो लेटर कंसेक्यूटिव वर्ड से शुरू होते हैं दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन. एलिट्रेशन भी है यहाँ पे. एलिट्रेशन एफ, फायर, फेवर. देखिए यहाँ पे एफ, यहाँ पे एस. दैट्स वी कैन से एलिट्रेशन. रिपीटिशन ऑफ लेटर्स, दो कंसेक्यूटिव वर्ड का जो लेटर होता है सेम लेटर शुरू होता है, दैट इज लिटरेशन. इमेजरी भी है. व्हाट्स इमेजरी? जस्ट आई टोल्ड यू दैट इमेजरी इज यूज्ड टू मेक रीडर्स परसीव थिंग्स इन्वॉल्विंग देयर फाइव सेंसेज. जिससे यहाँ पे मैंने बोला भी कि सम से द वर्ड विल एंड इन फायर. इमेजिन कर रहे हो आप, यहाँ पे डिजायर है, imagination है. To say that destruction is also great, this is imagination. Personification भी है. You know well, personification is to give human qualities. किसी नॉन लिविंग को या एक्सट्रैक्ट आइडिया को लिविंग मान लिया जाता है, दैट इज अ पर्सोनिफिकेशन ही है. एंड एक और भी इसमें है इंजमेंट. What is enjambment? It is defined as the thought or clause that does not come to an end at a line break. जैसे यहाँ दिया ना, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कहते हो यहाँ पे फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कोई फुल स्टॉप नहीं है यहाँ पे. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर.
तो ये मूव करता है नेक्स्ट लाइन पे, खत्म होता है, कहीं पॉज नहीं होता, दैट्स कॉलिंग जजमेंट. ओके, so I hope you have understand this poem.